Students, welcome back to your channel GK Student Corner. Today we will discuss about oxidation and reduction reaction. Okay, जारण एवं विजारण रासायनिक प्रतिक्रिया आज आमे आलोचना करिबा. Okay, oxidation and reduction. Okay, first हम देखिबा oxidation बा जारण प्रतिक्रिया काहाकू कुआ जाए. देखो बर्तमान ना जारण बा ऑक्सीडेशन काहाकू कुआ जाए ना जेउ प्रक्रिया रे ऑक्सीजन रो जोग बा हाइड्रोजन रो विजोग घटिताए. ओके, जेउ रासायनिक प्रतिक्रिया रे हाइड्रोजन रो विजोग एवं ऑक्सीजन रो जोग घटिताए सही रासायनिक प्रतिक्रिया को जारण बा ऑक्सीडेशन प्रतिक्रिया कुआ जाए. ऑक्सीडेशन रिएक्शन कुआ जाए. The chemical reaction in which addition or gain of oxygen and removal or loss of hydrogen takes place, that chemical reaction is called as oxidation बा जारण रासायनिक प्रतिक्रिया. ओके, एटा होची तार कोन हमरो ना डेफिनेशन. ओके, आगो के जिबा बर्तमान आमे कोन करबा ना किछि उदाहरण बा एग्जांपल बताने देखिबा. है ना नहीं. प्रथम एग्जांपल you see here, first example, this is your first example. अम्लजान रो उपस्थिति रे कार्बन रो दहन घटिले, अम्लजान रो उपस्थिति रे कार्बन रो दहन घटिले कौन सृष्टि हुए. है ना नहीं. कार्बन डाइऑक्साइड गैस सृष्टि हुए. है ना नहीं. ताले कौन ना अम्लजान रो उपस्थिति रे कार्बन रो दहन घटिले हमर कोन ना अंगारकाम्ल गैस सृष्टि हुए. है ना नहीं. यह होची कोन ना गोटे जारण बा ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ओके, एग्जांपल you see the reaction. Here is your carbon and this is your oxygen gas. When carbon will burn in the presence of oxygen, you will get carbon dioxide. Okay, here you see the addition of oxygen takes place, so it is called as oxidation. Here oxidation takes place because addition of oxygen taking place here. Okay, second example you see ना magnesium अम्लजान उपस्थिति रे कौन हुए ना दहन घटिले कठिन magnesium oxide सृष्टि हुए. है ना नहीं. when magnesium will burn in the presence of oxygen, you will get magnesium oxide. Okay, solid magnesium oxide. This is also an example of oxidation reaction. Okay, this is also an example of oxidation reaction because in this case also addition of oxygen, you see here addition of oxygen is taking place. Okay, so it is also a oxidation reaction. You see the third example. You see the third example here. When iron react with oxygen in the presence of water vapors. Okay, you see here water H2O gas. Okay, you see here H2O gas. You see H2O gas means water vapors. Okay, when it is written as H2OL, this is your water only liquid in the form of liquid. When H2OS, that means it is your ice, water in the form of solid. When H2O in the form of gas, that means it is your water vapor. Okay, जलर कौन एटा ना vapor. Okay, ताले कौन हुए ना आर्द्र जलवायु अम्लजान सह लुहार प्रतिक्रिया घटिले सेथिरे कौन हुए ना कलंकी सृष्टि हुए. है ना नहीं. सेथिरे कौन हुए ना कलंकी सृष्टि बा रस्टिंग हुए. है ना नहीं. That means rusting of iron is a example of oxidation reaction. You see here when iron react with the oxygen in the presence of your water vapors,
you will get this compound. This is your rust. Okay, Fe2O3. Okay, this is your iron oxide. Okay, hydrated iron oxide. This is called as rusting of iron. Okay, this is the formula of rust. Okay, so these three examples are addition of oxygen. Okay, these three examples are addition of oxygen. ताମାନେ कोन एठी कोन होची ना ऑक्सीजन रो कोन होची ना जोग होची हने नहीं ए तीनटा केस कोन हला ना एठी देखो ऑक्सीजन रो जोग हला in the second case oxygen ro jogo, in the third case also oxygen ro jogo. That means these three reactions are called your oxidation বা জারণ প্রতিক্রিয়া হনে নি তাহলে আকু জারণ প্রতিক্রিয়া কুহাউছি। আর উদাহরণ আমি দেখিলে হনে নি বর্তমানে আগুকু ଯିବା কোন হইছি না সেই যে অক্সিজেনটা আমার এটা হচ্ছে কোন না আডিশন অফ অক্সিজেন হেলা সেমতি সেই কোন হবে না অক্সিডেশন বা জারণ প্রতিক্রিয়া ঘটিব। But in this case कौन होगा ना हाइड्रोजन रो वियोग बा विजोग घटिबो। That means here your removal of hydrogen होई मध्य हमर कौन हबो ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन बा जारण प्रतिक्रिया हबो। ए केस रे कौन हबो ना हाइड्रोजन उर्जान रो कौन हबो ना विजोग घटिबो। That means लॉस हबो हाइड्रोजन रो लॉस होई हमर एटी कौन हबो ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन बा जारण प्रतिक्रिया घटिबो। बतन कोन ना एग्जांपल बतन नाम नबा यू सी हियर फर्स्ट एग्जांपल कोन है ना ब्रोमीन कोन हो ना हाइड्रोजन सल्फाइड सह प्रतिक्रिया कले हाइड्रोजन ब्रोमाइड और सल्फर सृष्टि हुए। कोन हुए ना हाइड्रोजन ब्रोमाइड और सल्फर सृष्टि हुए जते बेले कोन हबो ना ब्रोमीन हाइड्रोजन सल्फाइड सह प्रतिक्रिया करिवो सेतला हमकु कोन मिलिवो ना हाइड्रोजन ब्रोमाइड और सल्फर मिलिवो हने नि ताल कोन ना यही प्रतिक्रिया रे कोन हुए ना हाइड्रोजन सल्फाइड रु देखो एठी H2S होती हाइड्रोजन सल्फाइड रु कोन हबो ना हाइड्रोजन रो विजोग घटिबो। एठी कोन हबो ना H2S रु हाइड्रोजन कोन हबो ना रिमूव हे जिवो माने बाहर जिवो। बाहर गेले कोन हबो ना देखो हमर कोन घटुची ना एठी S हे गेला एठी सल्फर ओनली हे गेला काहे कि ना हाइड्रोजन सेटू पळेला हने नि ताले एठी कोन हला ना हम H हाइड्रोजन ब्रोमाइड सृष्टि हैला ता माने कोन एठी हैला ना एठी H2S रु हाइड्रोजन कोन हैला ना हमरो बाहरी की पळेला ना लॉस होई गेला हने नि तणु एठी होची कोन ना एटा होची कोन कुआ जिवो ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन कुआ जिवो बा जारण प्रतिक्रिया कुआ जिवो। कारण एठी होची हाइड्रोजन रो कोन हैला ना विजोग हैला बा रिमूव हैला बा आमे ताको कोन कहि परिबा ना लॉस हैला हने नि तेणु यह मध्य एक जारण प्रतिक्रिया। एग्जांपल 2 बतन देखिबा कोन ना व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ oxygen okay that means when hydrochloric acid is oxidized okay you see hydrochloric acid is oxidized okay to form chlorine gas and hydrogen is removed from this hydrochloric acid when hydrochloric acid is oxidized okay in this case from hydrochloric acid hydrogen will remove and you will get chlorine gas and water okay you see here hydrochloric acid is oxidized here because from hydrochloric acid hydrogen is removed okay so it is also an example of your oxidation by jarana pratikriya are you clear okay बतन आगो को जिबा एग्जांपल 3 नबा आ गोटे एग्जांपल नबा कोन हबो ना व्हेन इथेनॉल अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन ओके व्हेन इथेनॉल मतलब कोन ना इथाइल अल्कोहल ओके हम जते कार्बन कंपाउंड चैप्टर पढिबा सेते बेले भलो भाव जानिबा आर सब यूपैक नेम कोन सब रहिछि बुझला कॉमन नेम कोन यूपैक नेम कोन हम सब भलो भाव जानिबा बतन एटा जो कोन ना इथेनॉल C2H5OH जेटा कोन ना इथेनॉल okay ethyl alcohol that means when ethanol or ethyl alcohol undergoes partial oxidation kon hue na it lose hydrogen honne it lose this ethyl alcohol will lose hydrogen and you will get acetaldehyde and hydrogen gas is removed because from hydrogen is removed from ethyl alcohol okay that means in this case ethyl alcohol undergo partial oxidation okay
पार्शियल ऑक्सीडेशन कौन हुए ना इथाइल अल्कोहल हेबा फल आमर कौन हुए ना एसिटाल्डिहाइड द फॉर्मेशन हम है ना नहीं तापर कौन हम ना जो इथाइल अल्कोहल हाइड्रोजन रिमूव होची तेणुक ये पार्शियल ऑक्सीडेशन घटुची कहार इथाइल अल्कोहल आर क्लियर बुझी पारे आपण मान सब है ना नहीं ताले ऑक्सीडेशन कौन है ना आम प्रथम देखले कौन ना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होई केमती होची इन दिस केस इन दिस 3 एग्जांपल hydrogen is removed. Okay, hydrogen is removed from these compounds and your oxidation reaction is taking place in this case. Okay, are you clear? Okay, next you see what is the reduction. एबे आमे कोन देखले ना ऑक्सीडेशन देखले है ना नहीं बर्तमान आमे कोन देखिबा ना विजारण बा रिडक्शन देखिबा है ना नहीं रिडक्शन काहाकू कह जाउची बर्तमान आमे ऑक्सीडेशन देखले बर्तमान देखिबा रिडक्शन काहाकू कह जाय बा विजारण काहाकू कह जाय है ना नहीं विजारण काहाकू कह जाय ना जेउ प्रतिक्रिया कोन हुए एटी होची कोन ना उल्टा हुए है ना नहीं सेटी कोन होतला ना ऑक्सीजन रो जोग होतला इन दिस केस कोन हबो ना हाइड्रोजन रो जोग हबो इन दैट केस इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन ओके हाइड्रोजन कोन होतला ना रिमूव होतला एठी कोन हबो ना ऑक्सीजन कोन हबो ना रिमूव हबो है ना नहीं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कोन ना बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर है ना नहीं इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन सेठी कोन होतला ना ऑक्सीजन रो जोग होतला हाइड्रोजन रो विजोग घटुतला है ना नहीं ऑक्सीजन होची ऐड होतला हाइड्रोजन होती रिमूव होतला इन केस ऑफ रिडक्शन हियर हाइड्रोजन ऐड हबो और ऑक्सीजन होची रिमूव हबो है ना नहीं ताले बर्तमान कोन होची ना you see here reduction is defined as either addition of hydrogen or removal of oxygen. Okay, it is called as your reduction. Are you clear? This is the definition. Okay, let us see some example. Okay, you see example of reduction. बर्तमान में देखिए कौन ना example of reduction reaction. In this case, you see हाइड्रोजन रो जोग केमती होची एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होई केमती रिडक्शन होची सेटा बे प्रथमे देखिबा है ना तापर देखिबा ऑक्सीजन रो विजोग बा रिमूव होई केमती रिडक्शन होची तले प्रथम एग्जांपल कोन छै ना हाइड्रोजन गैस कोन छै ना हाइड्रोजन गैस जते सल्फर सह कोन करबे ना प्रतिक्रिया करबो व्हेन हाइड्रोजन गैस विल रिएक्ट विथ सल्फर ओके यू विल गेट व्हाट हाइड्रोजन सल्फाइड H2S ओके you will get hydrogen sulfide okay when hydrogen gas will react with oxygen you will get hydrogen sulfide okay in this case you see the reaction okay when this is your hydrogen this is your sulfur this is your H2S that means in this case addition of hydrogen takes place okay in this case addition of hydrogen takes place okay so it is a reduction reaction. Are you clear? Understood? You see example 2 जलीय हाइड्रोजन सल्फाइड रो क्लोरीन गैस सह ओके कोन ना जलीय हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन गैस सहित रिएक्शन करी हमको कोन मिलबो ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं सल्फर मिलबो है ना नहीं जलीय देखो ये जलीय हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब कोन जो हाइड्रोजन सल्फाइड गोटे गैस सेतले जल रे कोन हबो ना डिजॉल्व हेतिबो है ना नहीं एक्वस मतलब जल रे जेतले कोन हेतिबो ना द्रवीभूत हेतिबो है ना नहीं दैट मींस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इज कॉल्ड योर कोन ना जलीय हाइड्रोजन सल्फाइड है ना नहीं तो कोन हबो ना जेतले जलीय हाइड्रोजन व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विथ क्लोरीन गैस यू विल गेट hydrochloric acid and sulfur okay this is also an example of reduction reaction okay this is also an example of reduction reaction because in this case you see addition of hydrogen देखो क्लोरीन एते कोन हला ना addition of hydrogen हला है ना नहीं तेणु कौन है ना दिस इज ऑल्सो ए रिडक्शन रिएक्शन कहीं ना एथरे कौन होची ना एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होची है ना नहीं तेणु एटा कौन ना गोटे रिडक्शन रिएक्शन अंडरस्टूड आगो को जीवा
नेक्स्ट यू सी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अम्लजान वियोग है ना नहीं अम्लजान वियोग घटी केमिति आमर कौन होची ना रिडक्शन रिएक्शन होची है ना नहीं अम्लजान वियोग घटी केमिति आमर रिडक्शन बा विजारण प्रतिक्रिया घटुची है ना नहीं ताले कौन हम एग्जांपल बर्तमान देखिबा फर्स्ट एग्जांपल होची कौन ना रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होई केमिति आमर ना रिडक्शन रिएक्शन घटुची है ना नहीं बा विजारण प्रतिक्रिया घटुची किभली ना अम्लजान वियोग घटी ओके दैट मीन्स बाय रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन the reduction reaction will takes place. Okay, you see when copper oxide react with hydrogen gas you will get copper and water. You see here copper and water. Okay, that means when copper oxide will heat in the presence of hydrogen gas, okay, you will get copper and H2O. Okay, you see here from copper oxygen is removing, yes or no? In this case you see this is your copper oxide. From copper oxide oxygen is removed, okay, is removed and you will get only copper. Okay, so this is an example of reduction reaction because in this case your removal of oxygen takes place. Understood? Okay, next is example 2. When carbon monoxide, okay, when carbon monoxide will react with hot ferric oxide, okay, when carbon monoxide will react with hot ferric oxide, okay, you will get solid iron and carbon dioxide gas. Okay, you will get carbon dioxide gas. You see here from ferric oxide your oxygen is removing here. Okay, this also an example of reduction reaction. Okay, you see here in case of example 4 when lead oxide react with carbon you will get lead and carbon monoxide. It is also a reduction reaction because in this case from lead oxide oxygen is removed. Okay, so it is also a reduction reaction. Similarly zinc oxide react with carbon you will get zinc and carbon monoxide. Okay, this is also an example of reduction reaction because in these 4 example you saw that oxygen is removing in these 4 reactions. So these 4 reactions are example of reduction reaction. Okay, understood? Are you clear? आगो को जीवा स्टूडेंट्स आज आम देखले कौन ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है ना नहीं ऑक्सीडेशन रो एग्जांपल देखले रिडक्शन रो एग्जांपल देखले एवं स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट एवं ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन प्रतिक्रियार आमर डेली लाइफ रे किभली यूज रहउची ताहा देखिबा एवं रिडक्स रिएक्शन मध्य देखिबा एवं सीबीएसई बोर्ड रे किभली भाव रे क्वेश्चन सब आसुची एवं आम स्टेट बोर्ड रे मध्य किभली सब क्वेश्चन आसुची ताहा मध्य आलोचना करबा। एही बळी भाव रे आ गोटे एपिसोड रे आमर एही केमिकल इक्वेशन चैप्टर को आमे शेष करबा। मु भाबुची नेक्स्ट क्लास रे आमर एही चैप्टर शेष होबो एवं आमे आगो को सबू गोटे गोटे चैप्टर एमती करि चलिबा। वर्तमान जो 2 मास डिसेम्बर एवं जनवरी रहिला यही 2 मास को भल भाव रे यूज करंतु भल भाव रे कॉन्सेप्ट क्लियर करंतु। नेक्स्ट वीडियो रे देखाबा। आज रहुची जय जगन्नाथ।